Okay, so let's continue this class. In the previous class, we already seen that how we can perform the no load test of the single phase transformer, and we already few parts explained of the short circuit test also. Okay. Okay, Samshed, am I audible? Hello. Yes, sir. Okay. So in the previous class, we already seen that how we can perform the no load test of the transformer. And in this class, we just try to discuss the short circuit test of the transformer. Okay. Sir, wait sometimes, sir. Join others. Yeah, wait 1 minute and then we'll continue. Okay, so shall we start? And they can just allow him. Samshed. Yes, sir. So shall we start? Sir, I am on the only, sir. Other. So doesn't matter those who come, we will join him. Okay, in the running class. Or we wait 1 minute more. Yes, sir. Wait. Okay, so wait 1 minute. Continue. Okay, fine. So just let's start. Are you present in the previous class when we discuss no load test of the transformer? Sir? No, sir. No. Okay. Oh, fine. So in this session, we are going to discuss short circuit test of the transformer. Okay. Yes, sir. Okay. So short circuit test we can perform on the HV side, and LV side we just sort out. Okay. So the connection diagram for the short circuit test we already shown in the previous class. This is, yeah, this one.
So for the short circuit test, we have all the instrument connected in HV side and LV side short circuited. Okay. So one voltmeter, one wattmeter, and one emitter required for short circuit test, and one auto transformer for control the applied voltage. Okay. So since the short circuit test is performed at the rated current, okay. So primary voltage, that means the HV side of rating of the transformer, only 2 to 12% is required for the rated current flow in the winding of the HV winding of the transformer. So due to the transformer action, if the HV rated current flow in the LV winding, that means rated current also flow in the LV winding and HV winding due to the transformer action. Okay. So you just connect all the instrument in properly, just according to the circuit diagram, voltmeter connected across this HV winding, and one wattmeter connected here for measurement the power during the short circuit, and one emitter. Okay. And one emitter, just connect the in series with the HV winding. So emitter have two polarity. One is your positive and there is your negative. So positive terminal connected here. That means as input of the supply, and negative terminal you will take out, and through this one you connect the wattmeter. Okay. Connect the wattmeter. This wattmeter is polarity. You maybe find out in the laboratory when you are physical wattmeter you have to see, and emitter. They are positive and negative polarity. So you have to connect accordingly. Okay. This one is known as M, and this terminal of wattmeter is known as L, and this is your C. Okay. That means you have to connect these two coil of the wattmeter. One is known as, this coil is known as hello. Yeah. So okay. So due to the network issue, we just disconnected. So again, I start the this one. Okay, so when we perform the short circuit test, we concern two things. One is we perform this test at the rated current. So all the instrument we have to connect it across the HV winding and LV winding short circuited. Okay. So when you change the position of this auto transformer, then correspondingly to note down the reading of this emitter. Okay. When this emitter indicated the rated current of the HV winding, then you just stop the movement of this auto transformer and note all the reading. That means emitter, voltmeter, and wattmeter. Okay, reading. So at this point, you have to get the power consumption during the short circuit test. That means the ohmic losses. Since only 2 to 12% of the rated voltage is required for the flow of rated current. Okay.
2 to 12% voltage is required for the rated current flow in the HV winding. So only you have to consider the ohmic losses during the short circuit test. Whatever the power consumption by this uh, test indicated by the wattmeter, you have to consider ohmic losses and neglect the core losses. Okay. So this is the circuit diagram in the parameters representation of the short circuit. That means R1, X1, primary leakage impedance, and secondary leakage impedance is your R2, X2, and this is your core loss component. So core loss component can be neglected. So simplified circuit diagram look like this one. Okay, R1, X1, and R2, X2. You maybe say that the LV side impedance transferred towards the equivalent transferred towards the V side. HV side is not. This is your, if you connect then this one is known as secondary coil and this one is your primary coil. So all the secondary side parameters, if you transfer towards the primary side, then this one is your ring. That means secondary side reactance transferred to the primary side and secondary side resistance transferred towards the primary side. Okay, so this is the equivalent circuit of the short circuit refer to the HV side. Cannot say that. Okay. So you have note down the value of wattmeter, voltmeter, and ammeter. Okay. So how you can calculate the Jdh? Get short circuit. That means high voltage side. Jdh equal to कितना लिख सकते हैं? Impedance equal to voltage by current. नहीं. तो Jdh that means impedance on the high voltage side equal to कितना हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट वोल्टेज डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट. ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रिफर टू दी किधर हो जाएगा? हाई वोल्टेज साइड. तो JDH इक्वल टू क्या हो जाएगा? वोल्टेज बाय करंट. नहीं लिख सकते हम लोग? एंड REH इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? Ohmic loss is represented by current square into resistance. So through the wattmeter, you already note down the ohmic losses of the transformer that is represented by P short circuit. So if you want to find out the REH, that means equivalent resistance refer to the high voltage side. So equivalent resistance refer to the high voltage side. That means power which is noted by the wattmeter divided by current square. तो REH इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से इस सर्किट डायग्राम से? लास्ट क्लास में भी हम लोग एक्सप्लेन किए थे ना कि इफ एनी पैरामीटर्स want to transfer either HV side or LV side, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? LV साइड के पैरामीटर को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं HV साइड. दैट मीन्स X2 R2 जो ये है LV साइड. हेलो हेलो, हाँ बोलो. यस बोलो. यस कुमार साहब. हेलो. यस. ओ सर आपका आवाज नहीं आ रहा था उस टाइम. आवाज नहीं आ रहा है. अभी आ रहा है कट ना? कट के आवाज आ रहा है सर. कट कट के आवाज आ रहा है. नेटवर्क का इशू हो रहा है एक्चुअली. जस्ट अभी आवाज आ रही है ना? सर अभी आ रही है. Okay. So if you want to transfer the LV side
leakage impedance towards the primary side. So circuit look like this one. So what is the REH? That means this resistance and this resistance are in series, R1 and R2. So REH equal to how much? R1 plus this one is your R2 dash. Actually R2 LV side resistance refer to the HV side. Okay, so this is not directly LV side resistance. LV side resistance transfer to the HV side. Okay, so have you remember how we can transfer the impedance from one side to another side? You maybe follow the previous class also. Okay, we already explained how we can transfer the LV winding impedance towards the HV side or HV side winding towards the LV side. Okay, so simply if we apply the Ohm's law here, then this is your total impedance, is not R1, R2 dash and X1, X2 dash. So how we can represent the total impedance? That means R1 plus R2 dash plus J X1 plus X2 dash. That means Z impedance on the HV side. Okay. So if you want to find out the REH, then REH equal to nothing but power during the short circuit test divided by the square of the current. Okay. Power equal to I square R loss, ohmic loss. Okay. Of any resistance. So we can just note down the value of these two parameter. Okay, so Jdh equal to how much? V short circuit by I short circuit. So V short circuit you may be obtained with the help of voltmeter and I short circuit with the help of ammeter. You already obtained these two data. Okay, with the voltmeter and ammeter. So you are able to find out Jdh. That means equivalent impedance on the HV side. Okay. And now, if you want to find out the REH equal to nothing but P short circuit or divided by I short circuit. P short circuit are you obtained from the wattmeter reading. Okay. So whatever power consumed during this test is your short circuit test or ohmic loss. So ohmic loss power. So ohmic loss power equal to I square short circuit into REH. So REH equal to nothing but P short circuit by I short circuit. तो यहाँ से हम लोग REH भी फाइंड आउट कर सकते हैं. REH यदि फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? XEH इक्वल टू कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ JDH, that means equivalent impedance on the high voltage side, minus REH square. So we are able to find out the JDH, REH and XEH, okay, on the high voltage side. Now in the analysis of transformer equivalent circuit, the value of equivalent resistance and equivalent leakage reactance to the either side, okay, are used. So if the leakage impedance parameter for both primary and secondary are required separately, that means X1 and X2 if you require, or R1 and R2. So we already find here ROEH. So R1 and R2 equal to half of this one. That means 1/2 REH. Okay. And X1 and X2 equal to half of this one, 1/2 XEH. Okay. So we can find the R1, X1 and R2, X2 with the help of short circuit test. Okay. And other parameters, that means core loss resistance and magnetizing reactance, can be found with the help of no load test. Okay. So we can find the total equivalent parameters of the transformer. इतना ही तो पैरामीटर्स हम लोग डिनोट किए थे इक्विवेलेंट सर्किट में. ओके, so we are able to find out the complete parameters of the transformer if you perform the no load test and short circuit test. Okay, so have any problem in the short circuit test? How we can proceed, how we can perform the test?
and which parameter we are able to find out with the help of short circuit test and open circuit test. Yes. Is it clear? How we can find out REH and XEH with the help of short circuit test? Or we require to explain again? Yes, Kumar? Is it clear? How we can find out to REH and XEH? So you have to 2 or 3 points keep in your mind. The connection diagram and connection of the instrument and what are the various the instrument required for these tests, open circuit, short circuit test. कौन-कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए हम लोग को शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए? एक वाटमीटर चाहिए, एक वोल्ट मीटर चाहिए और एक ट्रांसफार्मर चाहिए जिससे हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना चाह रहे हैं एंड वन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड एसी सप्लाई। यदि इतना चीज हम लोग पास अवेलेबल है तो हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। That means you have to concern about the connection of this instrument. Okay, so you always perform the short circuit test on the HV side and LV side. Sir, your voice is not audible. Voice is not audible, na? Fluctuating net actually. That's why I think. Is it clear? Yes, sir, Am I clear. Am I audible, na? Okay. So just continue. We can. So this is all about the short circuit test and how you can perform the no load test. Same thing, so that means a no load test perform the circuit on the LV side and HV side kept open. Okay, so this circuit diagram maybe reverse of this one, that means short circuit test. That means in open circuit test or no load test you have to perform on the LV side. Okay, and HV side kept open. So with the help of no load test, we are able to find out core loss resistance RC and magnetizing reactance XM. And with the help of short circuit test, we are able to find out the R1, that means and X1, R2, and X2. Okay, so these with the help of these two tests, we are able to complete parameters of the transformer can be find out. Okay. So just consider one example. Just suppose that your parameters are given of this transformer. A 220 kVA, 2500 volt, and 250 volt 50 hertz single phase transformer gave the following result. Okay. Open circuit test perform on the low voltage side. So open circuit test voltage rating is your 250 volt and no load current is your 1.4 ampere recorded by the emitter and 105 watt power rating. Okay,
And short circuit test, when you perform on this transformer, then you will get the short circuit voltage 104 volt and short circuit current 8 ampere and power is 320 watts. So compute the parameters of the approximate equivalent circuit refer to the high voltage side and low voltage side. Okay. Also draw the exact equivalent circuit refer to the low voltage side. इस ट्रांसफार्मर पे हम लोग नो लोड टेस्ट परफॉर्म करें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करें, उसका पैरामीटर्स दिया हुआ है एंड वी जस्ट फाइंड आउट द कंप्लीट पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर on the high voltage side and low voltage side. So how you can proceed for this problem? कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे पैरामीटर्स on the refer to the HV side and LV side? क्या क्या रेटिंग दिया हुआ है सबसे पहले उसको नोट डाउन कर लो. ट्रांसफार्मर का रेटिंग कितना हुआ है? 20 kV है सर. 20 kV है. एंड वोल्टेज रेटिंग ट्रांसफार्मर का कितना दिया हुआ है? 2500 by 250. दैट मीन्स हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज रेटिंग हो जाएगा 2005 जो ज्यादा वाला है एंड लो वोल्टेज साइड हो जाएगा 250 वोल्ट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दिया हुआ. जब इस ट्रांसफार्मर पे व्हेन वी परफॉर्म दी ओपन सर्किट टेस्ट, सो ओपन सर्किट टेस्ट जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग को वोल्ट मीटर, एमीटर एंड वाट मीटर का रीडिंग दिया हुआ है. दैट मीन्स 250 volt and no load current is your 1.4 ampere and power is your 105 watt. Okay, during the open circuit test. And short circuit test 104 volt 8 ampere and 320 watts. तो हम लोग जस्ट फाइंड आउट करने कोशिश, सबसे पहला टर्म क्या फाइंड आउट करने कोशिश करेंगे? नो लोड पावर फैक्टर. नो लोड पावर फैक्टर cos थीटा 0 इक्वल टू कितना लिखते हैं? cos थीटा 0 इक्वल टू कितना लिखते हैं? यहाँ पे देखो cos थीटा 0 इक्वल टू कितना लिखे? PC by VIIQ. PC by V1 IE, that means नो लोड करंट. तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो. ये PC कोर लॉस पावर है, दैट मीन्स कोर लॉस पावर एट नो लोड टेस्ट. नो लोड टेस्ट पावर कितना दिया हुआ है? 105 एंड V1 कितना दिया हुआ है? 250 एंड नो लोड करंट कितना दिया हुआ है? नो लोड करंट कितना दिया हुआ है? 1.4 एम्पियर. 1.4 ampere. तो सॉल्व करो. cos थीटा 0 का वैल्यू कितना आ रहा है? दैट मींस cos थीटा 0 इक्वल टू कोर लॉस पावर डिवाइडेड बाय V1 इनटू नो लोड करंट. सो cos थीटा इक्वल टू कितना है? cos थीटा 0 इक्वल टू सॉल्व करो इसको. 0.3 आ रहा है. 105 0.3. 0.3 सर. 0.3. तो sin थीटा 0 का वैल्यू कितना आएगा? फाइंड आउट करो. स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin cos स्क्वायर थीटा पुट करो वहां पे वैल्यू. sin थीटा 0 इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट. कितना जो 1 माइनस 0.3 होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करो. 1 माइनस 0.3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.009. 1.09 ना.
तो उसे सिंप्लीफाई करो। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0.954। Yes, sir. आईसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? कोर लॉस कंपोनेंट करंट वैल्यू आई cos थीटा 0 पहले हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं 0.3. So just put I, that means how much? 1.4 into 0.3 कितना हो जाएगा? 1.4 into 0.3 0.42. ठीक है, Yes, sir. IC का वैल्यू हो गया। IM का वैल्यू उसी तरह से कितना हो जाएगा? IE sin थीटा 0। IE का वैल्यू दिया हुआ है 1.4, सेम रहेगा। sin थीटा 0 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट किए, तो जस्ट पुट करो इसको। Yes, sir. Calculating. Sir, 1.316. 1.316। नेक्स्ट हम लोग आरसी कौन सा? कोर लॉस रेजिस्टेंस। तो कोर लॉस रेजिस्टेंस आरसी इक्वल टू V1 बाय आईसी। V1 इक्वल टू 2 कितना दिया हुआ है? 50। V1 इक्वल टू 250 पुट करो, और आईसी इक्वल टू कैलकुलेट किया कितना? 0.42। 0.42 पुट करो। IC is equal to, sir, 1.316. Oh, sorry, sir. 0.42 है. 0.42 ना? हाँ, 0.42। sir. IC. So 250 divided by 0.42. Sir, 595.238. Okay. And XM, similarly calculate XM V1 by IM. So you already find out IM value 1.336. Just put up 250. 250 divided by 1.336. Sir, 1.89. One Oh, sorry, sir. 189.96. 189.86. जो भी है, okay. That is the magnetizing reactance value. Okay. So with the help of no load test, we just find out the parameters of core loss resistance and magnetizing reactance. Okay. Whatever the reading we have obtained with the help of wattmeter, voltmeter, and ammeter. Okay. So similarly, we can calculate RC and XM. Okay. Magnetizing reactance. एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अभी हम लोग फाइंड आउट किए थे कौन सा पैरामीटर? JDH, XEH एंड REH। तो JDH इक्वल टू कितना लिखे थे? JDH इक्वल टू कितना लिखे थे? 1 minute, sir. JDH इक्वल टू ZCH is equal to VSC by ISC लिखे थे, sir. JEH, not CH. EH. That means equivalent impedance on the high voltage side. So Z Yes, sir. suffix EH. Okay. तो VSC by ISC है, sir. तो जस्ट पुट करो उसमें वैल्यू VSC बाय IC। VSC इक्वल टू कितना दिया हुआ है शॉर्ट सर्किट में? 104, आई थिंक 104 वोल्ट शॉर्ट सर्किट, एंड I शॉर्ट सर्किट इज योर 8 एम्पियर। सो ZDH इक्वल टू 104 बाय 8 एम्पियर। कितना आएगा? 13, sir. 13। 104 बाय 18 इक्वल टू 13। REH इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? शॉर्ट सर्किट पावर डिवाइडेड बाय शॉर्ट सर्किट करंट स्क्वायर Divided by ISC square, sir. ISC स्क्वायर। तो पावर शॉर्ट सर्किट का वैल्यू दिया हुआ है 320 एंड करंट शॉर्ट सर्किट का वैल्यू दिया हुआ है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 320 डिवाइडेड बाय 64, तो इसको Sir, 5. 5।
तो XCH फाइंड आउट करो, दैट मीन्स लीकेज रिएक्टेंस on the high voltage side, equivalent leakage reactance on the high voltage side, X suffix EH. Root under Z square CH minus R square CH. REH square. Just 13 square minus 5 square. 5 square. That means कितना आ जा रहा? 169 minus 25. 25. That Under means root आएगा सर. 144. So 144 square root if you take that means 12. Is it not? Yes sir, 12 आएगा. 12. So XCH we already find out. Okay. So equivalent circuit parameter क्या हो जाएगा? RCL, that means on the low voltage side of the core resistance 595, magnetizing reactance on the low voltage side 187, and शॉर्ट सर्किट टेस्ट एक्चुअली परफॉर्म करते हैं हाई वोल्टेज साइड. तो हाई वोल्टेज साइड में रेजिस्टेंस आया कितना? 5. इज इट नॉट? यस सर. 5 आया. तो इसका आप लोग ट्रांसफर कराना चाहेंगे, देखिए लो वोल्टेज साइड कितना हो जाएगा? दोनों साइड फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है ना, हाई वोल्टेज साइड एज वेल एज लो वोल्टेज साइड. ओके. तो लो वोल्टेज साइड कोर लॉस रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट की RC इक्वल टू 595 and magnetizing reactance on the low voltage side, since the open circuit perform on the low voltage side, so XML, that means magnetizing reactance on the low voltage side equal to 187, and with the help of short circuit we find the value of REH on the high voltage side. So we just transfer that the resistance value towards the low voltage side. तो low voltage side यदि ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो कितना हो जाएगा? लो वोल्टेज साइड का वोल्टेज रेशियो, वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज साइड का वोल्टेज का होल स्क्वायर. ये पैरामीटर्स हम लोग कैसे वन साइड लो वोल्टेज साइड टू हाई वोल्टेज साइड ट्रांसफर करते हैं, ये इंपीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देख सकते हो प्रीवियस क्लास में. ओके, वी ऑलरेडी एक्सप्लेन. दैट मींस हाई वोल्टेज साइड रेजिस्टेंस यदि हम लोग ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो लो वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाय हाई वोल्टेज साइड, दैट मींस 250 डिवाइडेड बाय 2500 होल स्क्वायर. तो कितना हो जाएगा? 1/10 का होल स्क्वायर. इज नॉट 250 divided by 2500, that means 1/10 का होल स्क्वायर सर. 1/10 का होल स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर देना, जो एक्चुअल रेजिस्टेंस ऑन दी हाई वोल्टेज साइड है, दैट मींस 5, दैट मींस 1/5 by 1/100. 1/500. हाँ, तो कितना 0.05. यस सर. सिमिलरली रिएक्टेंस वैल्यू हियर लो वोल्टेज साइड, दैट मींस कितना आया था? रिएक्टेंस वैल्यू 12 आया था ना. हाँ सर. तो 12 इंटू 1/10 का होल स्क्वायर. इसमें भी रेजिस्टेंस का भी सेम ट्रांसफर करते हैं, रिएक्टेंस का भी सेम ट्रांसफर करते हैं, और वोल्टेज का भी सेम से ट्रांसफर करते हैं, लेकिन करंट के लिए रिवर्स कर देते हैं, दैट मींस N2 बाय N1 कर देते हैं. ठीक है, दैट मींस हाई वोल्टेज साइड डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज साइड का होल स्क्वायर टर्न्स रेशियो. Since the turns ratio is directly proportional to voltage, so either maybe turns ratio or maybe voltage, कुछ भी ले सकते हो तुम. ठीक है, यदि टर्न्स लो वोल्टेज साइड का टर्न्स रेशियो दिया रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द हाई वोल्टेज साइड, तो उसका ले सकते हो टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, या वोल्टेज दिया हुआ है तो वोल्टेज ले सकते हैं. ओके, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज. तो 12 इंटू कितना हो जाएगा? 1/10 का होल स्क्वायर. कितना आ रहा है? X equivalent 0.12. 0.1 to 12 by 100, that means 0.12. ओके, तो ये हो जाएगा कौन साइड? लो वोल्टेज साइड पैरामीटर टोटल नहीं, लो वोल्टेज साइड का पैरामीटर. हाई वोल्टेज साइड का पैरामीटर कितना हो जाएगा? हाई वोल्टेज का कितना हो जाएगा? रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हाई वोल्टेज साइड में, तो हाई वोल्टेज साइड में है ही नहीं.
रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑन द हाई वोल्टेज साइड एंड इक्विवेलेंट रिएक्टेंस ऑन द हाई वोल्टेज साइड, वो तो हाई वोल्टेज साइड है। सिर्फ एलवी साइड में जो हम लोग फाइंड आउट किए हैं आरसी एंड एक्सएम, उसको ट्रांसफर करना है एलवी साइड में। नहीं, क्योंकि आरसी एंड एक्सएम वी फाइंड विद द हेल्प ऑफ ओपन सर्किट और नो लोड टेस्ट. Since the no load test or open circuit test performed on the LV side, so this parameter we require to transfer towards the high voltage side. तो RC का वैल्यू हम लोग कितना फाइंड आउट किए, तो 595, उसको हम लोग को ट्रांसफर करना है हाई वोल्टेज साइड। तो उसको जस्ट ट्रांसफर करो। कैसे ट्रांसफर करो, सेम तरह से ट्रांसफर करना है। सेम तरीके से ट्रांसफर करना है। क्या कर रहा है, 595 को ट्रांसफर करना है हाई वोल्टेज साइड में। तो हाई वोल्टेज साइड में क्या होगा, दैट मीन्स ये वोल्टेज डिवाइडेड बाय ये वोल्टेज का होल स्क्वायर, 2500 डिवाइडेड बाय 250, दैट मीन्स कितना होगा 10 का होल स्क्वायर। तो 595 इंटू 10 का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि लो वोल्टेज साइड से और हाई वोल्टेज साइड से पैरामीटर कैसे ट्रांसफर करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमेशा यूज पड़ेगा तुम लोग में, आइदर ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं या लो वोल्टेज साइड या शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 595 इंटू 2500, 100, ओके, एंड दैट मीन्स 59,500। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस को यदि ट्रांसफर करेंगे हाई वोल्टेज साइड कितना हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस कितना था, वैल्यू कितना ऑप्टेन किया था 187 XML। मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑन द लो वोल्टेज साइड। अब कितना किए थे पता नहीं सर। तो कहाँ कॉपी में कहाँ कर रहे हो, वही तो कॉपी में है कि नहीं, कॉपी में सॉल्व हाँ कर सर, उसी को खोज रहे। कहाँ पर किए हो नहीं मिल रहा है, वो खोज रहे सर। जस्ट देखो जिसमें नो लोड टेस्ट का कैलकुलेशन कर रहा था उस पार्ट में होगा, नो लोड टेस्ट का कैलकुलेशन जिसमें कर रहे थे। 250 डिवाइडेड बाय 1.336, देखो सर वो आया था 189.96। 189, ठीक है, तो 189 इंटू कितना हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, नहीं सर ये हो जाएगा 189.96। yeah. So this is the way we can transfer the low voltage side parameters towards the high voltage side or high voltage side to low voltage side. तो दोनों साइड हम लोग कैलकुलेट कर लिए। जो हम लोग को पूछ रहा है प्रॉब्लम, अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर रिफर टू दी हाई वोल्टेज साइड एज वेल एज दी लो वोल्टेज साइड एंड ड्रॉ द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू दी लो वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड के जो पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट किए हैं उसको जस्ट ड्रॉ कर देना है, ना जो भी पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट किए लो वोल्टेज साइड वाला। तो लो वोल्टेज साइड वाला पैरामीटर देखो ध्यान से, यही है ना, कोर लॉस रेजिस्टेंस 595 आरसी एंड मैग्नेटाइजिंग रेजिस्टेंस 187 या 189 जो भी आ रहा है तुम्हारा, एंड 189 आया था जो भी है 189, तो 189 एंड REH इक्वल टू 0.05 एंड XEH इक्वल टू 0.12। यस सर। तो इसको जस्ट हम लोग सिमिलरली ड्रॉ कर दिए, इक्विवेलेंट सर्किट रिफर टू दी हाई वोल्टेज साइड, ओके। ये है टोटल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। सो इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई सेपरेट कर दें
इसको हम लोग R1 साइड इंडिकेट करें, R1 and X1, and this is your half of this equivalent. That means 1/2 X1 and X2 equal to 1/2 X EL. That means equivalent leakage reactance refer to the